आपकी जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है मुझे बहुत पसंद है. एक्चुअली आपने जो क्रांति बताया, क्रांति का जो शब्द यूज किया, आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली एप्ट फॉर एनपीएस. एंड आई कीप सेइंग दिस, एंड कई लोगों को ये लगता है कि मैं क्या मतलब व्हाट एम आई स्मोकिंग सो टू से व्हेन आई से दिस, दैट NPS can change people's lives. I will now change it to can revolutionize people's lives. I'm going to borrow your term and thank you for suggesting this. सिंपल है कि इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है. आज एक फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री के दिग्गज से आपको मिलवाता हूं. इन्होंने बैंक में काम किया है, लाइफ इंश्योरेंस में काम किया है, ब्रोकिंग में काम किया है और अब पिछले कुछ साल से NPS, जो कि न्यू पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन सिस्टम, जो भी कह लीजिए, NPS जो सरकार ने क्रिएट किया था लोगों को अपनी रिटायरमेंट तक पहुंचने का, HDFC पेंशन फंड के ये CEO है श्रीराम अय्यर. बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए श्रीराम. आपसे हालांकि एक ही बार जूम पे इंटरव्यू किया था मैंने, लेकिन जितना सीखा उस दिन मैंने आपसे. क्या बात है. NPS की तो आप मतलब पूरी डिक्शनरी बन गए. You're being very kind. नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ. नहीं, I think क्योंकि उसके बाद मैं एक्चुअली लोगों को समझा पाया, क्योंकि थोड़ा हम ये पढ़ते हैं टियर 1, टियर 2, टियर 3, ये सब उस पर मैं आऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन बहुत अच्छे से आपने समझाया था और आज भी यही मेरी कोशिश रहेगी कि आप हमारे दर्शकों को NPS क्या है, लेकिन उससे एक स्टेप पहले लेते हैं. आजकल फायर का जमाना जी. फायर या सब जो यंग लोग हैं सबको रिटायरमेंट करनी है. हमारे भी जमाने में ऐसा होता था. हम भी जब सब बाहर निकलते थे कॉलेज के, यही कहते थे 40 साल. करेक्ट. फिर जब 40 तक पहुंचते थे वो 40-50 बन जाता था. फिर 50 से 60. वेरी ट्रू. क्योंकि हम रियलाइज करते थे कि भाई हमने अभी तक तो जो जमा पूंजी करनी चाहिए थी इकट्ठी नहीं की. तो फायर कोई ऐसा नया कॉन्सेप्ट नहीं, लेकिन साउंड बहुत अच्छा करता है. तो पहली बात तो क्या आप फायर में बिलीव करते हैं कि इंसान को एक जिंदगी के कुछ साल सिर्फ काम करना चाहिए और फिर रिटायर होकर एंजॉय करना चाहिए, कि क्या जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि जिंदगी भर आप एंजॉय करें? आपकी क्या फिलॉसफी रही? आपने इतनी जगह काम किया, इतना सक्सेस मिला आपको, तो आपकी क्या फिलॉसफी रही? फर्स्टली थैंक यू वेरी मच विवेक कि आपने मुझे इस शो में बुलाया आपके, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आज मैं आपको NPS और भी जो सब्जेक्ट हैं जिसके बारे में बात करेंगे, आई विल ट्राई एंड सिंप्लीफाई थिंग्स एज योर नेम ऑफ द शो सजेस्ट. सिंपल है तो मैं भी सिंपल रखने की कोशिश करूंगा. नाउ एज फार एज योर क्वेश्चन ऑन दिस होल फायर मूवमेंट इज कंसर्न्ड, ये जो फायर का जो फायर चला हुआ है लास्ट कई सालों से, इसमें आई थिंक 2 पहलू हैं. एक तो ये है कि देयर इज अ सेट ऑफ द न्यूअर एज, कह लो आप, Gen X कह लीजिए, Gen Alpha, अभी तो कई सारे नाम है जो आई एम नॉट इवन फेमिलियर विद व्हाट दोस gens आर, बट essentially there are expectations that are there in this community or in this let's say cohort of people, the youngsters, to say कि भाई हम जो है 15 साल काम करेंगे, 10 साल काम करेंगे, 20 साल काम करेंगे, उसके बाद हम जो है we will enjoy our life. अब मुझे ये लगता है कि, and in my own experience and the experience of a lot of other people that I've had the good fortune of knowing, you need to refire rather than retire. Right? And this is a term that I picked up from one of my very dear friends who's also a financial advisor, and she actually, gave me this term, and she said you should look at when you want to refire rather than retire. Right? And that term really tells me that in life, you don't really retire from something, but you refire into something, right? So essentially, I mean, while all of us would want to imagine a situation, हम सोचना चाहते हैं कि भाई एक दिन ऐसे होगा कि हम जो है 0 काम करेंगे और बीच में बैठे रहेंगे और बियर पियेंगे. ये कई लोगों की मतलब कल्पना ही होती है, but the reality is that you need to think about what after that. There are 2 broad issues that I think, typically comes to people's mind. One is, of course, कि भाई आपके पास do you have enough to be able to live through this so-called retired life, right? And as you know equally well, that there is improving mortality, right? I mean, people are now living well into their 80s, right? I'm fortunate to have parents who are well into their 80s, touch wood,
they are in good health, and with improving medical conditions ये होने वाला है. So which means that all of us will be blessed with fairly long life, most of us, right? Because by and large medical conditions and medical facilities are improving. So we need to think about whether there is enough to be able to live for as much or beyond the amount of time that you really worked towards creating a corpus. So एक तो ये है, this is the financial element to this. The second element, which I think doesn't get spoken about, इतना ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं होता है, but the reality is that जब आप काम करते हैं, you're identified many a times by what you do and where you work and what is the kind of work that you do. Once you have given that up, when you choose to say, I want to put an end to this and I want to move into the next phase of my life where I will do nothing, there is a khalipan which sets in. Maybe after 6 months you may enjoy traveling the world, maybe going to Goa and staying there for 3 months in a shack and spending time there. But what after that? I think ये जो खालीपन है, and I have seen this play out. लोनलीनेस सबसे बड़ा पेंडेमिक. बिल्कुल. और ये इसकी जो implication on health है, right? And I have seen this, and this is something that I've always wondered. Why is it that by and large जो आप self employed category के जो लोग होते हैं, जो गद्दी में बैठते हैं, for instance, right? दुकान है या गद्दी में बैठते हैं या business है उसके अंदर ऑफिस में बैठते हैं, you will see that most of the patriarchs are well into their 70s and are very, very active. So I think there is a very strong correlation between staying gainfully occupied and your health. And this is something that I've seen in a number of salaried individuals who at the age of 60 say, listen, I have not really planned for what I will do post my retirement. And you see that in a couple of years, their health starts taking a downturn, right? So I think this FIRE movement, my personal opinion, of course, each to his own, but I think it is a little overstated, and I think one needs to think through the implications of this so-called retirement, of early retirement. And I think even in the developed countries where this FIRE movement started in US, and there are people who have scrounged their way towards retirement at the age of 40, have gone on to realize that I have actually not lived my life at the age of 30s and 35s and 40s. What you can do at that age, you probably can't do at in your 50s. So, what is the balances? I think one needs to, each person to himself, as I said. But मुझे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है, too much of it's been sort of given a lot of fancy sort of positioning. But in reality, I think it is a lot more complex. Real life is a lot more complex than that. And that's my personal view. पर आप तो खुद ही रिफायर के उदाहरण हैं. आपने ब्रोकिंग कंपनीज के साथ काम किया, एक बिल्कुल अलग किस्म का एक स्किल सेट है. बैंकिंग में आप थे जी, एक अलग स्किल सेट. जी जी बिल्कुल. लाइफ इंश्योरेंस में गए, वहाँ एक अलग स्किल सेट है. अब एनपीएस में है जी. आगे उम्मीद करता हूँ आप और 10 चीजें ट्राई कर लेंगे जब तक आप रिटायर होंगे. तो जी, ये जो एक अप्रोच है आपका करियर का, जी, क्योंकि कई लोग जो फाइनेंशियल सर्विसेज में आपके टाइम में आए, जब खुल रहा था फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, जब आपने स्टार्ट किया, दैट्स करेक्ट. और इंश्योरेंस ले लीजिए, म्यूचुअल फंड्स ले लीजिए, फॉरेन बैंक्स ले लीजिए, सब ले लीजिए, तो ब्रोकिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग तब शुरू हुई. बिल्कुल. तो कई लोग जो आपके पेयर्स हैं वो उन्होंने एक स्ट्रीम पकड़ी और उसी में रहे जी. लेकिन आप कॉन्स्टेंटली लर्न नए नए सेक्टर्स में जाते, ये कैसे हो? So, to be very honest, Vivek, I think इसका मैं श्रेय देना चाहता हूँ to people who chose me and thought it fit that I would fit into whatever role they had. So, for instance, मैंने शुरुआत करी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से, जैसे आपने कहा. मैंने रिटेल लोन्स की शुरुआत करी 1994-95 में, जब जो है और भी गुजरात मार्केट में, जहाँ पे आप जो है उस कम्युनिटी को अगर आप 18% फ्लैट रेट पे लोन बेच सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं. वहाँ पे पैसे के बारे में इतनी अच्छी समझ है लोगों की कि आप जो है वहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी इज वेरी वेरी हाई, राइट, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट दे मे नॉट हैव गॉन थ्रू फाइनेंशियल लिटरेसी क्लासेस, बट इट इज इन देयर ब्लड. So I started my career, and initial stages of my career I spent in a market which really taught me a lot of things. उसने उस मार्केट ने मुझे बहुत सिखाया, रिटेल बिजनेस और रिटेल लेंडिंग बिजनेस के बारे में और रिटेल ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बहुत सारी चीज़ें सिखाई उस एक्सपीरियंस ने मुझे. उसके बाद जो है बैंकिंग में जो ओपनिंग मिली, जो मेरे उस टाइम पे there was a foreign bank which was opening in the area that I was working, and they thought it fit that I would potentially make the cut. Maybe
the choices that they had were limited. So I was fortunate to be one of those people. बहुत modest. नहीं sir, बिल्कुल मैं I'm not saying that at all. I think that's the reality. थोड़ा क्रेडिट अपने आप को भी दे reality. दीजिए And I think- आपने अच्छा ही किया होगा कि लोगों ने आपको और उस टाइम पे सर मेरी सोच बहुत ही आई वुड से नेसेंट थी. मैं सोचा कि मैंने 2 साल तो लेंडिंग कर लिया, मैंने पर्सनल लोन कर लिया, 2 व्हीलर कर लिया, कार फाइनेंस कर लिया. अब जो है मैं जाके लाइबिलिटी साइड की बिजनेस समझना चाहूंगा, विच वॉज व्हाट द बैंकिंग इंडस्ट्री ऑफर्ड. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बैंकिंग वॉज लार्जली अराउंड कासा एंड फिक्स डिपॉजिट्स. जैसे आपको मालूम होगा 92, 93, 94, 95 के टाइम पे बैंकिंग मेंट बैंकिंग वॉज नॉट अबाउट third party products, which is a very large portion of a bank's income stream, as well as the amount of time that a frontline officer spends. So I had the good fortune of spending a good 14 years with a very, very reputed bank. And I learned a lot in that period, right? I learned the basics of banking. हमारे जो पहले चीफ मैनेजर थे, जो मेरे बॉस थे, उन्होंने और वो हार्डकोर बैंकर थे. वो उन्होंने स्टेट बैंक में उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया था, और उनकी जो समझ थी और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग पकड़ थी बैंकिंग के बारे में इतनी मजबूत थी कि वो ही वुड कंडक्ट टेस्ट्स फॉर अस एवरी वीक. देयर वुड बी अ टेस्ट कि भाई लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, एंड बहुत सारी चीजें, बैंक गारंटी कैसे करी जाती है, वर्किंग कैपिटल लिमिट्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो बहुत सारी चीजें उन्होंने सिखाई. और अलोंग द वे जो हमने जब बैंक शुरू करा और जब वो जो ब्रांच शुरू करा, और मतलब वी हैड टू गो आउट, मोबिलाइज डिपॉजिट्स, मोबिलाइज कस्टमर्स, I learned a lot, and I was able to also leverage a lot of the experience that I had gained in the stint prior to that. So that one thing led to the other, and as you rightly pointed out, I mean, those were the really golden days, and they continue to be. I mean, India continues to be, in my opinion, in a very, very sweet spot. But those are the initial days of the economy opening up. और उस टाइम पे जो है बहुत सारी चीजें, जो नई चीजें लॉन्च हो रही थी. मुझे याद है 98, 99 में करीब 99-2000 में जब सारे नए म्यूचुअल फंड्स लॉन्च हुए थे, म्यूचुअल फंड हाउसेस यूज्ड टू कम टू अस एंड टेल अस दैट यू शुड डिस्ट्रीब्यूट दिस, एंड एज बैंकर्स वी वुड से नो, फिक्स्ड डिपॉजिट्स हमारा पैसा हम कैसे जाने दे सकते हैं. एंड आज देखिए आप, थिंग्स हैव चेंज्ड 180 degrees. But and we learned as to why it is important for us to broad base a client's overall portfolio. In that sense, उस टाइम पे पोर्टफोलियो का इतना ज्यादा हमारे को बहुत ज्यादा समझ नहीं थी. But how do you make sure that you're able to offer a wider variety of products, be it mutual funds, be it insurance, and so on and so forth? So all of these things, and then of course there were more, let's say, nuanced products, sophisticated products. Private equity हो गया, AIF हो गया, आपका venture capital कहते थे उस टाइम पे. उसके बाद it became AIF. All of these things were clubbed under the alternate investment fund umbrella. Did all of these things, right, and then spent some time, within a joint venture with just focusing on wealth management, because one of the things that drove me during this course of my career in the banking business was seeing that there is such a huge opportunity to, and I'm not trying to sound holier than thou, that is not my intent, but I genuinely believed that people, as far as their financial wealth and managing their finances is concerned, needed to be assisted. अब वो उनको मालूम है कि नहीं मुझे नहीं पता, but I definitely believe that उनको जरूर they need guidance, but you need to be able to win their trust, right? So therefore, I embarked on this foray into wealth management, and I said, let me work on this field. And of course, wealth management was also an area which was evolving, which was growing, which was exploding in some sense, because every year, there were more and more wealth managers that are coming into play. Non-bank wealth managers were becoming more and more prominent. इसके पहले जो था, आपको ध्यान होगा कि सारे बैंक्स में ही ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स की सेल और इंश्योरेंस की सेल होती थी. And then subsequently, independent wealth management firms started coming in, and I had the good fortune of managing one such firm with a very, very talented set of people. Again, वहाँ पे भी वहाँ की challenges अलग थी, वहाँ की learnings अलग थे. And then, of course, in broking, I actually ended up gaining some very, very deep experience with some very exceptionally good colleagues, learning from them about how do you do B2B2C, जो business to client जो कहते हैं, because we were actually setting up a technology platform for advisors, for financial advisors, and therefore, and I had this fantastic opportunity to not just build this technology platform in some sense. I mean, I was involved in the process of building the platform, and my colleagues were, of course, doing a lot of hard work, and I was getting a lot of the credit for that. But we built the platform. But more importantly, it gave me a tremendous amount of grounding on how
customers, and I used to go out along with financial advisors to client meetings because they would always say कि सर आप आ जाइए, हम इस client के पास चलते हैं. उस client की total पूंजी होएगी शायद 50 लाख रुपए, 60 लाख रुपए. I mean, it wasn't as if these were private wealth clients with crores of money. I was very happy to do that because मुझे ये समझ आता था कि जो client के पास जो है limited wealth होता है, वो आपकी advice को और आपके जो ओपिनियंस को ज़्यादा वैल्यू करते हैं. मैं नहीं कहता हूँ कि प्राइवेट वेल्थ क्लाइंट्स नहीं करते हैं, बट मुझे लगता है कि पीपल हु हैव लिमिटेड अमाउंट्स ऑफ मनी, हु हैव लेट अस से यू कॉल इट मास एफ्लुएंट कह लीजिए, आप जो भी कह लीजिए, वहाँ पे द वैल्यू ऑफ व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल इज अ लॉट मोर important for them. You are able to create an impact. So this whole, during this time period, one of the big drivers for me was how can I create more impact in people's financial lives? And it continues to be a passion for me. It continues to be something that I would want to spend a lot of my time going forward as well. And what I do today, which is to, manage the pension fund for HDFC group. I mean, they thought I was fit to be, responsible and running this business. I'm incredibly fortunate to be in this group. The HDFC group is, I'm sure, known to most of your viewers. You're very familiar with it. And it helps me to fulfill this passion and this aspiration of mine to be able to take good quality financial products and advice to end customers. And this product, ये पैशन कहाँ से आया? I think this is, in this year... बहुत पैशनेट हैं आप इसके बारे में. सर आप देखिए, कई लोग देखिए नौकरी तो सब कर लेते, सक्सेस भी. You are being incredibly kind, I must say. ये जो पैशन है कि मैं दुनिया लोगों का भला चाहता हूँ, उनके लिए उनके पैसों को वो ठीक से मैनेज करे, ये कहाँ से आता है? सर ये पेरेंट्स से आता है, फैमिली से आता है, ब्रिंगिंग से आता है, चाइल्डहुड से आता है, कहाँ से आता है? All of these things, I think I come from a middle class family. My father used to be with the public sector undertaking, and we've had a comfortable life. ऐसी बात नहीं है कि हमारे को मतलब, I mean, they brought us up in the best possible way that they could, given the limited means. I think most of us have grown up in that kind of an environment, and I was fortunate to, good schooling, good education, and that was always a big priority. तो मेरा बड़ौदा में मैंने बहुत साल बिताए. मैंने करीब 18 साल बड़ौदा में बिताए मैंने, और फिर उसके बाद बेंगलोर करीब 10 साल, और फिर अभी मुंबई में 12-13 साल हो गए. सो आई बीन I've spent time across west and south. South is Bangalore, not so much Chennai, but largely around Bangalore, and otherwise it's essentially Gujarat and now Bombay. But I think to your question, Vivek, on where did this come from? I think one, of course, is upbringing, the value for money, making sure that you are able to spend every rupee, value every rupee that you have, and every rupee that you spend. This is something that was taught to us, not by in terms of being told to us, but by demonstration. That's how we used to live. That's number one. Number two, and I think this left a lot more deeper impression on me, was the experience that I saw people undergoing. हमारे जो clients होते थे banks में या कई तरह के clients जिनको हम मिलते थे, कई बार ये लगता था कि इन्होंने ऐसे डिसीजन कैसे लिया होगा, क्या सोच के लिया होगा. और obviously, somebody in their wisdom would have advised that client to do certain set of things, and you would wonder why, this is happening. Because for the end customer, for that individual, that whatever he has put together through his blood, sweat and tears, you basically have belied that person's trust if you have done something which is not. So my attempt has always been to, and sir, financial services industry, whether we like it or not, I think we've been through a process of evolution, and this has happened in every country. There are good apples, bad apples. And I think my attempt has been to make sure that, we are able to do the right thing by the client, win their trust. And, one of my ex-bosses again taught me this. He said, it's first the battle of the heart, then it is a battle of the mind, and then it is a battle of the wallet. So it is first the battle of the heart. So अगर आप किसी का दिल जीत सकते हैं, if you can win somebody's trust, then I think that person is going to listen to you. And not necessarily what he wants to hear. More often than not, I have seen, and this is something that I have, in my experience, has been that a relationship manager or a wealth manager, essentially when they go to the client and the client says, मुझे ये चाहिए, या मुझे ये product में invest करना है, the next answer from the relationship manager invariably is,
I can give it to you and I can maybe do a pass back or whatever, right? Why is it that the client wants to do it? What is the driver from the client's perspective? Why is it that, you want to even consider this product? Why don't you look at it from a slightly different standpoint? Why is something that very few people are able to ask? And I learned this, in this experience in this broking firm that I spent, and I think it was an incredible, learning experience for me. I learned from my peers, from my colleagues, from my seniors, and it was truly incredible. And that's, I think, sort of drives me to do more of, what I do these days. श्रीराम, क्या आप मानते हैं कि जो हम सब देखते हैं कि अमेरिका में इतना वेल्थ बना लोगों के पास, और भी डेवलप्ड कंट्रीज में हम जब कहीं ट्रैवल करने जाते हैं विदेश, देखते हैं इतने बुजुर्ग लोग हैं अब्रॉड से और आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, और कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ, और आपसे जानना चाहूँगा, आप एक्सपर्ट हैं इसमें, कि जो 401 के प्लान था जी यूएस का, और मैं चाहूँगा कि हर दर्शक को, आज आप लोग सब इंटरनेट सेवी हैं, आप जाके ज़रा 401 के प्लान पढ़िए। अमेरिका में कई साल पहले, श्रीराम के पास ज़्यादा इसकी इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन एक हैबिट बना दी थी। बिल्कुल, वो हैबिट हमारे पास भी थी कि पेंशन ईपीएफ कटेगा, पीएफ कटेगा। बिल्कुल, फर्क कितना था कि वो अधिकतर पैसा इक्विटी में डाल देते, जी बिल्कुल, और हम अधिकतर पैसा डेट में डाल। बिल्कुल बिल्कुल। और तभी 30-40 साल बाद जब हम अपनी कंपनी छोड़ते थे, रिटायर होते थे, तो हमारी जो पूंजी थी वो इतनी थी जी, और उनकी पूंजी इतनी, बिल्कुल, क्योंकि कंपाउंडिंग का बेनिफिट हमें मिला। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या आप मानते हैं कि किसी ना किसी वक्त एनपीएस यही कर पाएगा? क्योंकि सब लोग आज एम्प्लॉय नहीं बनना चाहते, एंटरप्रेन्योरशिप का ज़माना है, लोग चाहते हैं अपने खुद का कुछ खोले। क्या आप मानते हैं कि एनपीएस जो है आज, और एक और दूसरी बात, आज देखिए भारत में जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आती है पेंशन फंड्स की आती है, जी बिल्कुल, कनाडा का, फलाना का, इधर का, तो जो सबसे बड़ी वेल्थ बनी है वो पेंशन में पैसे एक हिसाब से इक्विटी में डाल के लंबे समय तक कंपाउंडिंग करके बनी। बिल्कुल सही है। क्या आप मानते हैं कि एनपीएस ये क्रांति ला सकता है इस देश में? आपकी जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है मुझे बहुत पसंद है। एक्चुअली आपने जो क्रांति बताया, उस क्रांति का जो शब्द यूज किया, आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली एप्ट फॉर एनपीएस, एंड आई कीप सेइंग दिस। एंड कई लोगों को ये लगता है कि मैं क्या, मतलब व्हाट एम आई स्मोकिंग, सो टू से, व्हेन आई से दिस, दैट NPS can change people's lives. I will now change it to can revolutionize people's lives. I'm going to borrow your term, and thank you for suggesting this. The reality is, if you look at 401k की जो आपने जिक्र करी, 1986, if I remember correctly, is when 401k plans started coming into existence in the US. So it has been around for 30 plus years, almost 35 years. And as you rightly pointed out, 401k plans have been the boon for salaried Americans, working Americans, right? And of course, that plan has made sure that people are able to retire with significant wealth amongst people who are able to save, right? And that is a necessary condition. You need to be able to save to be able to build a corpus, right? NPS, if you look at the way NPS is structured, in fact, in 2004, when NPS was first launched, after the Oasis committee, जो कमेटी के तहत ये दवे साहब ने बिल्कुल बहुत साल इस पे काम, यस सर, बिल्कुल, और इन्होंने जो कमेटी बनी थी और उस कमेटी और उनके recommendations, they picked up the best of the features of products globally and created this product called National Pension System. और तब से लेके अब तक जो है उस प्रोडक्ट के अंदर भी कई सारे बदलाव आए हैं, कई सारे चेंजेस और इम्प्रूवमेंट्स आए हैं. But the reality is that I think the way NPS is structured, I genuinely believe that this is the most powerful retirement wealth creation tool that exists in our country. And I'm saying this with a lot of, not just because I am a proponent and an advocate of NPS, courtesy what I do for a living, but I genuinely believe that this can change people's lives. Let me take the example of some of the
investors and subscribers that I had the good fortune of meeting over the last few years that I have been in this role. In fact, कई सारे लोग जो हैं जिन्होंने 2010 या 11 में ये सोचे बिना कि भाई ये एनपीएस से कुछ बनेगा आगे जाके, उन्होंने बस शुरू कर दिया कि भाई शुरू करते हैं, कुछ है, मतलब सेविंग्स हो जाएगा, एटलीस्ट एक डिसिप्लिन तरीके से जो है पैसा कट के कहीं जमा हो जाएगा. They are truly staggered at the amount of money that they have been able to build over the last 10 to 12 years. The reality is that the last 10 to 12 years have been, of course, the markets have been good. It has seen some downturns, during different points of time. But the reality is that over the last 10 to 11 years, and these are people who are colleagues of mine who started without knowing कि भाई इसकी क्या impact हो सकती है. Today they are saying this is such a meaningfully large corpus. So this has actually happened by accident in many cases. Our attempt is now over the last few years, and the regulator, as you know, and you, I'm sure, have interacted with the regulators as well. The attempt that the industry is making, and as a representative of the industry also, our attempt is to make this a habit rather than an accident. And most of the people that have seen large corpuses that are getting created only in a matter of 10 years. And this product is very, very nascent. If you ask me, अभी 20 साल ही हुआ इस product को. 2004 से लेके 2010 तक तो it was not even open for private individuals, right? So it was only open for government employees. Now that this change has happened, people are starting to realize the dramatic impact that it can have in their financial future. And I genuinely believe that over the next few years, and this generation is very, very smart, they understand what such products can do for you. And I think this can truly revolutionize, क्रांति ला सकता है हमारे भारत के जो retirement, जो government का भी mission है कि भाई we want India to be a pension society by 2047, of course quite some time away. I think this is clearly a catalyst to make that a reality for the Indian society. Genuinely believe that. तो मेरे कुछ सवाल हैं जी, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो अगर मैं क्विक क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर देते रहिएगा. कोई भी इंडिविजुअल एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल. इनफैक्ट आज की तारीख में टिल वेरी रिसेंटली द एज लिमिट वाज 18 से लेके 70 की उम्र तक आप कभी भी शुरू कर सकते हो. But very recently, in the finance bill, as you would have, I would have heard the honorable finance minister talk about this. It has been opened up for people right at the time of birth. So there is a product called NPS Vatsalya, correct, which is essentially for people who have not attained majority, can also open a NPS account. Of course, the account for them would be for these minors would be opened by the parent or the guardian, and so therefore the age is actually from birth right till the age of 70. You can open a और मिनिमम क्या टिकट साइज है? इसमें भी मंथली पेमेंट हो सकती है एसआईपी की तरह? जी बिल्कुल, एकदम. दिस इज एन एब्सोल्यूट पॉसिबिलिटी. द मिनिमम अमाउंट दैट यू नीड टू इन्वेस्ट इन व्हाट इज कॉल्ड एज द ऑल सिटीजंस मॉडल इज 1000 रुपीज. इसके अंदर देयर आर सम वेरी वेरी माइनर चार्जेस दैट आर रिकवर्ड बाय द at the time of account opening for the purpose of opening the account. But other than that, 1000 rupees is what you can start with. You can do a quarterly SIP, monthly SIP, yearly SIP, whatever you want to do. But the objective is to help you save in a disciplined manner. And that is how the product is constructed. It takes you 3 minutes to, maybe 5 minutes to कहाँ पे खोल सकते हैं? तो इस अकाउंट को आप हर एक पेंशन फंड जो कंपनी जैसे HDFC पेंशन फंड की वेबसाइट में अगर आप जाएंगे तो देयर इज अ क्लिक टू ओपन एन एनपीएस अकाउंट वाली बटन होएगी, आप तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो यू विल बी टेकन थ्रू द जर्नी, एंड दैट इज अवेलेबल अक्रॉस ऑल द पेंशन fund companies as well. HDFC Pension, of course, is also a point of presence, as it is called. I don't want to complicate matters here, but we also are in the business of not just managing money, but बैंक से भी खुलवा सकते हैं? बिल्कुल बैंक से खुलवा सकते हैं आप. Broking company? Every single bank, most broking companies, almost all the broking companies and banks, तो large कई विकल्प banks, हैं, कहीं मैं पे कहीं कई सारे रास्ते हैं. बिल्कुल बिल्कुल आप, and if you want to open an account through any of the pension fund companies, of course, हर एक के वेबसाइट पे जो है there is an opportunity for you to just go and click a button and और इसकी जो कॉस्ट है, कहते हैं कि म्यूचुअल फंड जो वैसे ही लो कॉस्ट हो गया, जी उसका भी एक फ्रैक्शन है. बिल्कुल सही है. ये थोड़ा डेटा तो ये है कि दिस इज एज यू नो 2004 में जैसे मैंने बताया, दिस वाज फर्स्ट क्रिएटेड फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, एंड द गवर्नमेंट, आई थिंक द इंटेंट वाज टू कीप द कॉस्ट वेरी लो, and therefore the cost has been very very low right from the since inception. तो मैं आपको इसकी कॉस्ट स्ट्रक्चर बता दूं ब्रॉडली. इसके अंदर 3 टाइप की कॉस्ट, ब्रॉडली 2 टाइप के कॉस्ट है. एक तो कॉस्ट हो गया आपका फंड मैनेजमेंट का, जो उसको फंड मैनेजमेंट चार्ज कहते हैं.
वो फंड मैनेजमेंट चार्ज इन केस ऑफ द पेंशन फंड कंपनीज, इन केस ऑफ एनपीएस, इज बिटवीन 0.03% to 0.09%, माने 10 पैसे से कम प्रति रुपया, राइट? सो दी प्रति 100 रुपया, राइट? सो लेस देन 1.1% is the cost of managing the money. 0.03 to 0.09 का मतलब यह है कि at smaller asset AUM sizes for the newer pension fund companies, because they need to be compensated more so that they are able to set up their infrastructure better. For smaller sizes, the costs are slightly higher, at 0.09%. But at the highest slab, which is above 1.5 lakh crores of assets under management at a pension fund company level, it is only 0.03%, right? So between 0.03% and 0.09% is the cost of managing money. So this is by the way, the biggest cost out of all the other costs that are there. And then there are some minor costs, as I told you, account opening की जो मैंने बात करी, 200 से 400 रुपए की cost है. Of course, it's a function of whether you are opening it as a retail individual or you're opening it as a corporate individual. The pricing could be slightly different. But broadly, the cost is between 200 to 400 rupees at the time of account opening. And then every time you contribute, there is a minor charge that is levied towards the contribution charges. And then at the time of exit, there is again a very minor charge of 0.125% or thereabouts. So in fact, there was a... आप तो commission दे ही नहीं पाते होंगे. So this is a very, very low cost product. This product is expected to be a pull product and a product which is priced in such a manner that we expect that individuals will see tremendous amount of value in this product and it need not be in some sense sold. So that was the intent. But in reality, of course, as you know, any product, just because the pricing is low, will not sell. For NPS, while the pricing is of course very, very competitive and a fraction of what it is in, let's say, other actively managed, choices that... बाकी जगह हम 4 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, 1.5 रुपए की बात करते हैं. यहाँ पे हम पैसों की बात करते हैं. Fully loaded cost for somebody who, let's say, chooses to remain in the fund and starts with, let's say, even 5,000 rupees a month. Fully loaded cost पूरे 20 साल के अगर आप मान लीजिए इन्वेस्ट करता है, इसके अंदर कोई इन्वेस्ट करते हैं, the cost is actually less than 0.2% per annum. Everything included, all costs. लंबी अवधि में तो सेविंग भी इस कॉस्ट बिल्कुल ज्यादा दिखेगी. बिल्कुल 1% saving over a 25-30 year time horizon will give you 30% more corpus at the end of the tenure. आपको तो ये मालूम है. Yes, 25 to 30% more if you save 1% as cost. So cost is a leakage. और इसमें मैं पूर्ण रूप से इक्विटी में भी जा सकता हूँ. आप जो है इसके अंदर टियर 1 जो है, आप 35% सरकार कहती है करीब कि इक्विटी के ऊपर 75% जो है, आप टियर 1 के अंदर 75% आप बिल्कुल इक्विटी में जा सकते हैं. और टियर 2 जो है, विच इज मोर लाइक अ पार्किंग अकाउंट, वहां पे आप पूरे 100% तक आप इक्विटी में जा सकते हैं. और स्विच भी कर सकते हैं. ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट, ये जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात छेड़ी है, विच इज अराउंड फ्लेक्सिबिलिटी. इन माय ओपिनियन दिस इज अगेन अ प्रोडक्ट विच इज गॉट सो मच फ्लेक्सिबिलिटी दैट इट इज नॉट नोन टू पीपल. तो एक तो एक्टिव चॉइस, ऑटो चॉइस है, जिसके बारे में हम शायद बात करेंगे बाद में, बट मोर इम्पोर्टेंटली देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल. या तो आप फिल इट, फट इट, शट इट, फॉरगेट इट वाले ऑप्शन में जा सकते हो, या आप खुद अपनी जो है एसेट एलोकेशन आप तय कर सकते हो, या और उसके अलावा आप हर एक एसेट क्लास के अंदर आप अपना फंड मैनेजर चूज कर सकते हो. तो आपको लगता है कि वो इक्विटी के अंदर फला फंड मैनेजर ठीक रहेगा मेरे लिए, क्योंकि दे आर अ बेटर फंड मैनेजर इन इक्विटी, यू कुड चूज देम. You could choose somebody else for fixed income, which is corporate bonds and government security. So every single asset class can be managed by a different fund manager. Not just this, you can change the fund manager twice a year. You can change your asset allocation 4 times a year. Zero cost, zero tax implication. तो इतनी तो जो है इसके अंदर flexibility है, which is quite unparalleled in my opinion. And these are all things that, improved. There is improved understanding now. But I think it needs to get better, and opportunities such as this that काफी ज्यादा, क्योंकि आपने जिस तरह से ये समझाया है, हालांकि आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहता हूँ. इंट्रोडक्शन में मैं बोलना भूल गया, अभी हाल ही में आपने 50,000 करोड़ का ईयूएम भी शायद We are close to 1 lakh now. 1 लाख करोड़ के आसपास. बिल्कुल. We are 97,000 मैंने कब पढ़ा? अब 3,000 करोड़ शॉर्ट है बस. 2023 में आपने पढ़ा होगा, मई, जून, जुलाई. We are now close to 1 lakh crores of 97,000 and change. इसका मतलब next few weeks hopefully आ रहे हैं, लेकिन इस पे बहुत काम हुआ सरकार का, और टैक्स बेनिफिट भी है. वो 2 लाख वाला जो लिमिट है, तो ये सब मिलाकर एक आम इंसान को सोचना तो जरूर चाहिए. Absolutely. कि इसमें निवेश किया. Absolutely. 100%.
एक आखिरी सवाल श्रीराम के, लंबी अवधि में वेल्थ बनाने का जो एक रूप है, हम कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते रहते हैं, तो क्या ये तय है आपके एक्सपीरियंस से, जो आपने देखा है कि वेल्थ वैसे ही बन सकती? क्योंकि मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि देखिए हाल ही में हमने देखा बहुत ज़्यादा लोग आए हैं कंपैरेटिवली, कहते हैं पिछले 4-5 साल में उसके पहले के 15-20 साल से ज़्यादा लोग आए मार्केट में। बिल्कुल। तो लेकिन कई बार देखते हैं, जैसे सेबी ने भी एक रिपोर्ट डाली कि 9 out of 10 लोग एफ.एन.ओ कर करके उसमें लॉस करते हैं। बिल्कुल। तो इस पर आप अगर मोर एज ए फाइनेंशियल इंडस्ट्री के वेटरन के तौर पर अगर आप बताएं कि क्यों ज़रूरी है लंबी अवधि के लिए रहना? देखिए, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि एनपीएस में मैं लॉक्ड इन हो जाऊं, पीएफ में वो नहीं कहते, पीएफ में वो आदत एक बन गई है कि मैं जिंदगी भर डालता रहूंगा। और लेकिन कहीं ना कहीं जब बात आती है फाइनेंशियल प्रोडक्ट की, एक्विटी की, तो लोग एकदम से 1 साल में निकालना चाहते हैं थोड़ा भी गेन। जी, हार्वेस्ट माई गेन्स कहते हैं उसको। आई वांट टू हार्वेस्ट माई गेन्स। मैंने बना लिया, 10% में निकाल लेता हूँ, नहीं तब से वेल्थ नहीं बनती। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू हैव टच्ड अपॉन, एंड मुझे ये लगता है कि इसकी कई सारे रीजंस हैं जो जिसकी वजह से, एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू थिंक अबाउट, राइट? तो सबसे पहला सवाल ये है कि व्हाट इज वेल्थ क्रिएशन? इज इट, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेडर एंड एन इन्वेस्टर। कई बार तो ये होता है कि लोग जो मेरे से ये मानते हैं कि भाई मैं कोई एक्सपर्ट हूँ फाइनेंशियल मार्केट्स पे, तो you know, I mean, maybe I can say take some credit, but there is an expectation that I know something. You know, I have some, you know, foresight about what is going to happen tomorrow. क्या लग रहा है मार्केट? And the answer, my answer is, दे दीजिए श्रीराम। My answer is always कि मुझे तो नहीं पता, बहुत आपको पता है तो आप बताइए मुझे। मैंने तो कई दोस्त खो दिए इस मामले। वो है, I mean, because they आपने खोए बहुत सारे, because उनको लगता है कि बताना नहीं चाहते, इसको पता ही नहीं दूसरे क्या बात करें। So the point is, I think the question to ask yourself is, are you an investor or are you a trader? This is one question that one must ask everybody. One must ask oneself. And if you're a trader, then your expectations should be aligned in such a manner. And I also recollect other conversations that you had on this show where, you know, there is, you know, and it is very obvious that people who have created wealth over long periods of time are investors and not traders. You could trade to keep yourselves entertained, right? But if you want to create long-term wealth, it is a boring journey. And you should be, and wealth creation has to be a boring journey in my opinion. You should not look for excitement in this journey to create wealth. अगर आपको excitement चाहिए तो बेशक आप चले जाइए कसिनो में और वहाँ पे जो मजे करने मजे करिए, या पत्ते खेलिए, आप जो भी करना है करिए. But this is not a place where you should look for excitement. So that is the first thing that I would like to say. The second thing that I'd like to say is that the lesser the moving parts in a portfolio, the more is the chances of you making money. ये देखिए, ये मेरे ख्याल से फाइनेंशियल इंडस्ट्री की सर्वाइवल, ये दिस इज मोर अ एग्जिस्टेंशियल रीजन व्हाई एवरी आए दिन लोग कहते हैं अच्छा जी इससे निकल जाओ, इसमें चले जाओ, इसमें निकल जाओ, इसमें चले जाओ. इवन म्यूचुअल फंड्स की बात करें या कोई और प्रोडक्ट की बात करें, देयर इज दिस अर्जेंसी टू कीप moving from A to B to C to D. The reality is that time in the market, और मैं कोई नई चीज नहीं कह रहा, मैं time in the market is better than timing the market. 90% plus of long-term wealth creation is impacted by your asset allocation and not by timing or not by products. So I think जितना simple रखें इस चीज को, जितना हम uncomplicated रखें और simple products का इस्तेमाल करें, जैसे NPS है, जैसे मैंने बताया आपको, कॉस्ट लो रखें और इसको आप रहने दें साइड, मैंने इसको छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है. एक बार आपने अज्यूम, आपने समझ लिया कि इसके आपको समझना जरूरी है कि भाई आप व्हाट यू गेटिंग इनटू, यू नीड टू अंडरस्टैंड इसकी इंप्लीकेशंस क्या है. कल को उठ के मार्केट 30% गिर भी सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा ऊपर जाता रहेगा. व्हाट आर द इंप्लीकेशंस? आर यू ओके? आर यू इज दिस द मनी दैट यू नीड इन द नेक्स्ट 1 year, 2 years, 3 years? तो मत डालिए यहाँ पे. वेल्थ क्रिएशन इज अ 20-year जर्नी, 30-year जर्नी. So choose products which will help you get to that journey with a high degree of probability. Investment is a probability game, Vivek. ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं.
There is not a game of certainty. Reality ये है कि इक्विटी के अंदर as an asset class, and if you look at a basket of stocks, the probability that you will make double-digit compounded returns over a 25-year time horizon is upwards of 90%. तो हमको तो probability खेलना चाहिए हमारे को. Everybody should be in the game of probability. Investing is about probability, not certainty. And you also know that as India, as an economy has grown and will continue to grow for the next few decades, fixed income rates will come down, whether we like it or not. Right? Today, Japan, we all know is close to 0%. US, of course, has been high over the last couple of years, but by and large, structurally, fixed income yields are going to come down. And therefore, for long-term wealth creation, look for vehicles such as this. And of course, there are other products as well. I'm not saying this, थाली में आपको सारी चीजें आपको होनी चाहिए उसके अंदर, and it should be a good balance. But I would strongly advocate for a product such as NPS should to be there in every single Indian's portfolio. और आयरनी देखिए लाइफ की कि हम लोग सब कहते हैं कि वॉरेन बफेट की तरह बनना जी, लेकिन उनकी इन्वेस्टिंग जर्नी सबसे बोरिंग है. और वो कहते हैं कि मैंने 13 साल पे शुरू किया और सबसे बड़ी गलती की कि उससे भी पहले नहीं किया. और आप तो कह रहे हैं एनपीएस अब जिस दिन बच्ची पैदा हुए घर पे आप शुरू कर सकते हैं. बिल्कुल. In fact, Vivek, that reminds me of one more thing. Most of us, when it comes to medical issues, let's say we have some kind of a complicated medical issues, we will go to a doctor. But हर बंदे को ये लगता है कि investing तो मैं खुद कर लूँगा. Investing is something that I know how to do. I know what to invest in. अब ये मेरे ख्याल से it's a dangerous, and of course there will be times when you will succeed potentially, but you do need somebody to handhold you, to guide you. Somebody, when the markets turn around, when the markets are not going as per your expectation, you need somebody to hold your hand and say, don't worry, you're okay. This is what has happened in the past when the markets are around. The money that you have invested is money that you don't need for the next 5 years. So relax, right? That's the reason why you need professionals, and not every person can be Warren Buffett. We should outsource the job of somebody else, outsource the job of managing money in most cases. Financial service professionals, of course, can, in fact, sometimes familiarity also is not a very good thing, right? You're better off actually outsourcing the job of managing your own money to somebody else. And I think those are all things. आप घूमिए और बिल्कुल outsource करिए. कसीनो ही खेलना है तो एक असली कसीनो में जाइए, कम से कम कुछ गाने तो सुन लेंगे, नहीं तो बिल्कुल यहाँ क्या ये सब करते रहेंगे. बिल्कुल सही. बातें तो बहुत हैं करने को श्रीराम, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपका पैशन जो है बहुत ही इन्फेक्शस है, और उम्मीद करता हूँ कि सब दर्शक देखेंगे इस तरह के पैशन को, महसूस करेंगे और अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिना पैशन के क्या रिटायरमेंट, क्या ज़िंदगी. पैसे तो ज़िंदगी जीने के लिए होते हैं, और जो आप करें उसे पूरे दिल से करें, और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ज़रूर होए, क्योंकि बिना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के कोई इंडिपेंडेंस नहीं होती ज़िंदगी. एब्सोल्युटली. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. बहुत अच्छा, प्लेजर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच.